students, welcome to Krishnas Maths. This is your chapter 4 matrices and lecture number 9 of exercise 4b. Question number 1 to 8 हम solve करें. या पूर्व हमें 4a successfully complete कर सकते with 8 videos. 8 videos हम बने थे. 8 videos का प्रथम video होची basics and definition. Second about operations. Third से लेके from 3rd to 8 all are question solving of exercise 4a from question number 1 to around question number 43, I think. Yeah? It's a very big exercise, so you have completed that successfully. And today we are going to start with exercise 4b and first 8 questions. Question number 1 to question number 8. So if you are new to the channel, please like, share and subscribe. As I always like, share and subscribe कर दे मो channel को. तापर मो channel को subscribe करला पर मो app टाको download करिए so that you will get everything. हमें ये भितर कौन कर 2018 टू नेकी 2022 रो बोर्ड पेपर सीएचएससी बोर्ड रो पेपर सॉल्व करि पके छु ता सहित हमर एमसीक्यू सीरीज चलतिला लास्ट लेक्चर लास्ट ईयर इतरे अराउंड हमर 20-25 वीडियोस अछि और ई चैप्टर रो हम 4 वीडियो बने छु कंटेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर और एठी हमर गोटे खाली एमसीक्यू सीरीज तिला कंटेनिंग अराउंड 500 क्वेश्चंस एटा भी हम अपलोड कर ए सब आपन हमर ऐप रे मिल जु सीएचएससी बोर्ड को जाई आपन खोजी देख पारिबे सब प्लेलिस्ट अछि प्रॉपर्ली अरेंज हेके अछि ठीक अछि आ मैट्रिसेस पर हमर जेई लेक्चर होन आछो बाकी हमें कोन करथु खाली बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करथु किंतु बोर्ड क्वेश्चन सहित वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट जेई आल्सो तो ई चैप्टर पर जेमते हमर सेट और रिलेशन फंक्शन सरला पर हम कोन करलु 2019 रो 2020 रो 2021 रो जेते शिफ्टर जेते क्वेश्चन आसला सब हम डिस्कशन करछु अपलोड कर साइछु सिमिलरली आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रो सब करछि काइन एलपीपी क्वेश्चन वडा हमर जेई रे आसे नै सेति हम एलपीपी करनु किंतु मैट्रिसेस पर पुनी हम जेई क्वेश्चंस को डिस्कस करू ठीक है अब स्टार्ट कर हमर exercise 4b question number 1 to 8 टिके बेसिक जिंस पढ़ दो then we'll start next transformation of matrices row matrix and column matrix transformation माने कोन होय देखो जदी हमें गोटे मैट्रिक्स लिखले गोटे मैट्रिक्स इनती कोन लिखले 1 2 3 1 2 3 and 0 1 5 और जदी मते ए दुटा को ऐड करिवार अछि तो दिस इज योर r1 and this is your r2 तो मु लिखबी r1 plus r2 तो मते कोन मिलबा 1 plus 0 will be तो when I write r1 plus r2 ना ये का को रिफ्लेक्ट करिवो ये रिफ्लेक्ट करिवो r1 तो जो ऐड हबो r1 और r2 ऐड है कोठी रहबो r1 माने 1 3 8 and there will be no change in r these are called row transformations यदि वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को ले c1 minus c2 this will reflect c1 तो c1 minus c2 करिवो 1 minus 2 minus 1 0 minus 1 minus 1 2 1 3 5 so एम्प्टी करिवो हम कॉलम टा row transformation only rows are being used and column transformation only columns are being used and in row transformation only rows are being used these are only column हम एमती भी लिख पारियो r1 minus 2 r2 r2 minus 3 times r1 तो ये चेंज करिवो r2 को ये चेंज करिवो r1 को एटसेट्रा एमती करिवो सिमिलरली जदी तुम लिखले c3 इक्वल टू c3 minus 3 c2 तो ये चेंज करिवो c2 को जदी तुम लिखले c2 इक्वल टू c2 plus 3 times c1 ये चेंज करिवो c2 को एमती जोटा को चेंज करिवो से c2 ट्रांसफॉर्मेशन लिख आरंभ करिवो सब केते बुक रे एटा न लिखा दे खाली लिखा देता एटा c3 minus 3 c2 माने c3 minus 3 c2 करियो मतलब c2 को 3 रे मल्टीप्लाई करियो सेटा को c3 को माइनस करियो आ लिखबे c1 3 जगह का जगह लिखबे c3 जगह यार अर्थ c1 को 3 रे मल्टीप्लाई करियो c2 सहित ऐड करियो लिखियो का जगह c2 जगह लाइक ओके इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जब देखो दुईटी मैट्रिक्स अछि आगे मु बुझेली दुईटी मैट्रिक्स अछि a and b नॉन जीरो नॉन सिंगुलर कौन कौन है a and b नॉन जीरो एंड नॉन सिंगुलर out the last condition those must be square matrices of 2 cross 2 or 3 cross 3 तो जदि दुईटा मैट्रिक्स म आपन देली a and b
नॉन जीरो जीरो मैट्रिक्स है नथि नॉन सिंगुलर माने यार डिटरमिनेंट भी जीरो है नथि आउ दे मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स जदि एमती हेछि आउ जदि मु a into b कली या b into a into b और b into जदि मते i मिलला कोन मिलला मते i माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन आई विल से कि b is a inverse of a and in this case a is a inverse of b एटु लेट्स जदि a into b equal to b into a i हला i माने गोटे यूनिट मैट्रिक्स देन a और b मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर माने b को कहबी a रो इनवर्स और a को कहबी b रो इनवर्स a इनवर्स A inverse को हम रिप्रेजेंट करियो एमथी a raised to -1 and B inverse is represented as B raised to -1 बुझे जदि दुईटा मैट्रिक्स अछि A and B तो केमती मैट्रिक्स है नॉन जीरो और नॉन सिंगुलर इफ दे आर नॉन जीरो एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस एंड बोथ मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर और यूनिट मैट्रिक्स जदि I जदि यूनिट मैट्रिक्स है तो देन a को b रे मल्टीप्लाई कली या b को a रे मल्टीप्लाई कली जब मते i मिलला i माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलला देन आई विल से कि a इज द इनवर्स ऑफ b और b इज द इनवर्स ऑफ a तो जदि a को b रे इनवर्स कली तो हम a into b b माने a रे इनवर्स इक्वल टू i तो दिस also implies a into a inverse b is a inverse equal to i and b into b inverse is also equal to i यार अर्थ गोटे मैट्रिक्स को तार इनवर्स सहित मल्टीप्लाई करले ऑलवेज हमको कोन मिलियो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलियो बुझियो ना एट दुईटा नोट अछि प्रथम नोट मोइड कहि देली दुईटा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करबे i मिलियो देन गोटे को आगुटा हम इनवर्स करबे एंड सेहित पय दुईटा जगह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर हेबा दरकार आ जदि गोटे मैट्रिक्स अछि जार इनवर्स एक्जिस्ट करछ if the inverse of the matrix exists then the matrix is called invertible matrix कौन को जाको invertible matrix if the matrix of an inverse exists if inverse exists जदि गोटे मैट्रिक्स इनवर्स एक्जिस्ट करछि then the matrix is called an invertible matrix ठीक है एटा गेला अबाउट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जिबा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर छे पुनी थोड़ी डिस्कस कर दिस काहे ना ये एक्सरसाइज हमहु दरकार है सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स व्हिच इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज माने जदि a इक्वल टू a ट्रांसपोज हला इफ a इक्वल टू a ट्रांसपोज देन a इज सिमेट्रिक देन a इज सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन कहछि a i j इक्वल टू a j दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स पक्का कौन है दरकार स्क्वायर मैट्रिक्स है दरकार फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन हो a इक्वल टू माइनस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक रे a इक्वल टू a ट्रांसपोज a टी माइनस a ट्रांसपोज एंड फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे आर ऑलवेज जीरो एटा हम आगु डिस्कस कर तो द सिमेट्रिक रे कौन हेला a इक्वल टू a ट्रांसपोज हेला a i j प्रॉपर्टी कौन सेटिस्फाई करछ a i j इक्वल टू a j i स्क्यू सिमेट्रिक कौन हेगला a इक्वल टू माइनस a ट्रांसपोज एंड a i j जदी कहबे दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ a j i एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल जीरो डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो ठीक है ना आउट की कौन देखा जदि a गोटे मैट्रिक्स अछि देन a plus a ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक whereas a minus a ट्रांसपोज जदि गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स अछि a if a is a square matrix then a plus a transpose is always a symmetric matrix whereas a minus a transpose is always a skew symmetric matrix now this is important it is both question answer a square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrices गोटे स्क्वायर as केमति करिया देखो जदि गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स अछि a याकू आमे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस र सम रे एक्सप्रेस कर दी पारे जेमति आमे भी देखले a plus a transpose कोन होछि दिस इज सिमेट्रिक बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड a minus a transpose is skew symmetric by the first property a plus a transpose is symmetric a minus a transpose is skew symmetric जदि हम दुईटा जगह सम करिवा हमको a ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज कोन हेगला कैंसिल हेगला a plus a कोन आसो 2a आसो किंतु हमको a को एक्सप्रेस करला अछि तो 2 टा हटेबा 2 को कैंसिल करबा सो दिस इज हाउ एटा होछि फार्मूला दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस ए फार्मूला को यूज करके हमें गोटे मैट्रिक्स को फार्मूला आउत लिख देबा
So let us write the formula again. This is the formula using which you can, so this is A plus A transpose, which is a symmetric matrix, plus A minus A transpose, which is a skew symmetric matrix. दुईटा जब ऐड कला हमको मिलुछि 2A, हमको A दरकार तो डिवाइड बाय 2 करबा. So where this is A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. ठीक है. Now if A and B are both symmetric matrices of same order, यदि A और B symmetric है then A into B is symmetric if and only if AB equal to B. ये गोटे प्रॉब्लम. यदि AB equal to B हैला then A into B कौन हबो symmetric matrix हबो. Provided both are symmetric. दुईटा जाक यदि symmetric then A into B symmetric हबो if A into B equal to B into A. अब एटा होची गोटे इंपोर्टेंट फार्मूला. अब याको बेस करके हम क्वेश्चन मध्ये पाइबा एग्जाम. दिस इज वेरी 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 इंपोर्टेंट. याको बेस कर हम क्वेश्चन मध्ये आछ. आगु एक्सरसाइज करिया. देखो, state which of the following matrices are symmetric, skew symmetric, both or no. Not either. देखो एटा होची हमर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एटा कोन सिमेट्रिक. aij equal to aji होची कि नहीं. देखो ये होची a1 1 और ये होची a2 2. अब एठी रहला aij, एठी रहला aj. दुटा जक इक्वल अछि, दुटा जक इक्वल अछि तो एटा हेगला सिमेट्रिक. अब देखो पुन एटा भी सिमेट्रिक अछि. ए दुटा इक्वल a1 2 a2 1. ए एटा a1 3, एटा हेगला a3 1, एटा a2 3, एटा हेगला a3 2. These pairs of elements are equal, so this is again symmetric. Now come to the second one. X y z, this x y z are not equal to 0 माने ये पूर्ण सिमेट्रिक. x y जदि 0 होइथांता ताहले ये स्क्यू सिमेट्रिक हेता. क्या कोन हेता स्क्यू सिमेट्रिक. And since x y z is not equal to 0, this is neither symmetric nor skew symmetric. Neither symmetric nor skew symmetric. Symmetric काहे कि symmetric रे दुईटा वैल्यू इक्वल हेबा दरकार, किंतु एटी गोटे दुईटा नेगेटिव अछि तो स्क्यू सिमेट्रिक होना. असिमेट्रिक भी होबनी काहे कि सेटा इक्वल ना. आ स्क्यू सिमेट्रिक हेबा पे डायगोनल एलिमेंट 0 दरकार. काहे कि डायगोनल एलिमेंट कंडीशन तो दिया अछि. Diagonal elements are not equal to 0. Therefore, it's neither symmetric nor skew symmetric. Now come to the fourth one. Fourth one देखो skew symmetric. Why? Because देखो 81 अच्छे, 80 minus 1 अच्छे, 82 रहले, 80 minus 2 रहला, 80 minus 3 रहले, 83 रहला. तो aij equal to aij रो जो वैल्यू उडा कहला, that is minus aj से equal and diagonal all 0. तो skew symmetric. कौन है skew symmetric. Then come to the sixth one. minus 1 1 एटा तो ठीक अछि. 2 सहित minus 2 अछि, 3 सहित minus 3. तो एटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हेइ थांता प्रोवाइडेड डायगोनल एलिमेंट 0 हेइ थांता. डायगोनल एलिमेंट कोन हेइ थांता 0 हेइ थांता. तो डायगोनल एलिमेंट 0 नाही तो neither symmetric nor skew symmetric. Neither symmetric nor skew symmetric. Then seventh वाला देखो तो डायगोनल सब 0. एटा 1 ये minus 1 ये 2 minus 2 ये भी 0 minus है. तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक बुझिए. बढ़िया. True and false. If A and B are symmetric matrices of same order, symmetric matrices same order, and AB is equal to BA, AB minus BA is not equal to 0, so AB is not equal to BA. Then AB is not symmetric. यदि AB equal to BA हेइ थांता, एबे हम गोटे प्रॉपर्टी देखले AB equal to BA. यदि A और B symmetric अछि and AB equal to BA अछि, then AB symmetric हेता. तो AB not equal to BA देछि, then AB is not symmetric. So this is true. ठीक है. Next, for any square matrix A into A is symmetric. A into A transpose will be symmetric. Multiply करके A को A transpose करते हैं, सब वाले symmetric aspect. So this is also true. Then if A is any skew symmetric matrix, then A square is ना एमती किसी दिया A square यदि A skew symmetric अच्छी, then A square भी skew symmetric होगा एमती किसी में. Then if A is symmetric, then A square A क्यों हाँ एटा correct.
eta. If A is skew symmetric, then A minus A transpose is both symmetric. जदि A गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स होची, then हमें जानचे A plus A transpose symmetric and A minus A transpose skew symmetric. एमती किसी नहीं. So this will be false. For any square matrix, A minus A transpose is square skew symmetric. एटा हमें जानचे A minus A transpose कौन होगा? Skew symmetric. And square of a skew symmetric matrix. जब skew symmetric matrix to square करेगा, then this is again a skew symmetric matrix. तो एटा true है. So this is true. A matrix which is not symmetric is skew symmetric. Not always. यदि वो matrix symmetric नहीं, तो skew symmetric होगी नहीं, तो false. ठीक है, ठीक है. True false वाला क्वेश्चन है. Conceptual ना. If देख, A to कौन होगा देखिए, proof करिए. कौन देखिए, if A and B are symmetric matrices, since A and B are symmetric matrices, symmetric matrices of same order, with AB not equal to BA, fine. This is not final. This is fine. Whether AB minus BA is symmetric or skew symmetric. A and B are symmetric. Since A and B are symmetric, A equal to A transpose and B is equal to B transpose. B equal to B transpose. And AB is not equal to BA. Find whether AB minus BA is symmetric or skew symmetric. So find out AB minus BA transpose. AB minus BA transpose. जदि एटा AB minus B आसला then symmetric. जदि एटा minus of AB minus B आसला then skew symmetric. हम जानते हैं ना, A equal to A transpose जदि हला तो कौन होगा? symmetric. और जदि A equal to minus A transpose हला then skew symmetric. ठीक है, तो प्रॉपर्टी यूज करिए. A minus B transpose कौन कौन सी? A minus B transpose equal to A transpose minus B transpose. तो A transpose माने A B रो ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज माने B A रो ट्रांसपोज. देखो प्लान कौन करे? A B ट्रांसपोज इक्वल टू हम रिवर्सल प्रॉपर्टी अछि ना, A B ट्रांसपोज मन रखो. रिवर्सल प्रॉपर्टी कौन होछि? A B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज. तो एटा को हम कौन लिखते हैं? दिस इज B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज माइनस एटा को हम कौन लिखते हैं? दिस इज A ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज. उल्टा है गेला. बट B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B. दिस इज गिवन A transpose is equal to A transpose is A, B transpose is B. माइनस को कॉमन निकल, माइनस को कॉमन निकल कौन आसला? A B minus B A. तो को प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करला एटा ना. A transpose A equal to minus A transpose. A equal to A transpose माने सिमेट्रिक है ना. तो दिस इज A transpose equal to minus A. Therefore A B minus B A is a skew symmetric matrix. Is a skew symmetric matrix. Then digital question. Next step. If a symmetric or skew symmetric matrix is expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, then prove that one of the matrix in the sum must be zero matrix. If a symmetric or skew symmetric matrix is expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. एट गोटे कंसेप्ट हम यूज करिया. we know that zero matrix is both zero matrix का दुटा is both symmetric and skew symmetric. तो जोठी जहां पे दरकार हमें जीरो मैट्रिक्स और सिमेट्रिक भी यूज कर परियो एंड स्क्यू सिमेट्रिक आल्सो. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. तो जो जीरो मैट्रिक्स था सो दिस इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक आल्सो. बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. तो हम कौन कर देगा? इफ ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हमें कंसीडर करिया लेट A इज सिमेट्रिक. लेट A इज सिमेट्रिक. यदि A सिमेट्रिक अछि, A को हमें दुटा मैट्रिक्स रो सम रे एक्सप्रेस कर परबा. वन इज सिमेट्रिक
and the other one is skew symmetric. Any matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, where A is symmetric है B कौन है 0, which is A case रे. In this case 0 is your skew symmetric matrix. Then prove that one of the matrix must be 0 matrix. So this is symmetric, this is symmetric, and this is skew symmetric. This is skew symmetric. Therefore, one of the matrix is 0. One of the matrix is a 0 matrix. So here, one of the matrix is 0 matrix. तो एठी हमें कौन कले 0 टाको स्क्यू सिमेट्रिक वाले अप्लाई कर दे. जदि हमें उल्टा करबा, जदि हमें ए टाको स्क्यू सिमेट्रिक नबा, सेकंड पार्ट, let A be a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. So any square matrix, any symmetric or skew symmetric matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. 0 plus a लिख करेगा. एठी हम a टाको कंसीडर करछे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जदि a स्क्यू सिमेट्रिक हबो माने फर्स्ट टाको कोन हेबा दरकार, फर्स्ट टाको हेबा दरकार सिमेट्रिक, एंड सिंस 0 is both symmetric and skew symmetric, therefore here we have used 0 as skew symmetric matrix. So one of the matrix is 0. One of the matrix is 0. जदि any square matrix को एक्सप्रेस करिए गोटे सिमेट्रिक गोटे स्क्यू सिमेट्रिक, और जदि any square symmetric या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यूज करिए, one of the matrix has to be 0, नथिले हे करिवला. Then A and B are square matrices of same order. Then prove that AB and AB are all symmetric. Since A, B and AB are symmetric, therefore A is equal to A transpose, B is equal to B transpose, and AB transpose is equal to AB. So AB transpose is reversal property apply करती है. B transpose into A transpose equal to AB, but B transpose is equal to B, B transpose is equal to B, and A transpose is equal to A is equal to AB. B इधर से इक्वल नहीं है, therefore AB minus BA is always a 0 matrix. ये वाला कौन कर देखो कौन देखला A and B and AB are symmetric. यदि A symmetric मान A equal to A transpose, B symmetric माने B equal to B transpose, and AB symmetric माने AB transpose is equal to AB. या को रिवर्सल प्रॉपर्टी अप्लाई कर देले, B transpose को B कर देले, A transpose को A कर देले. ठीक है, तो अब AB डाउ से पता नहीं है, तो AB minus BA is always a 0 matrix. Then if AB and AB are all skew symmetric, since A is skew symmetric, since A, B and AB are all skew symmetric matrices, therefore यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो डेफिनेशन कौन, A equal to minus A transpose and B is equal to minus B transpose, and AB is equal to minus AB transpose. और हमें एमती भी लिख करना A equal to A transpose, A equal to A transpose for symmetric, minus for skew symmetric, B equal to minus B transpose, and AB is equal to minus AB transpose, which is AB equal to minus of AB transpose can be written as B transpose into A transpose, and this is minus of B transpose is minus B and A transpose is minus A, minus 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 is minus B into A, and this is A into B. B को A पर तो अंदर A into B plus B into A is equal to 0 matrix, and hence the proof. A plus A transpose is always symmetric. Now, given A is equal to 1, 2, 0 and 0, 1, 3 and minus 2, 5 and 3. This is A.
and A transpose will be equal to, row will become column, so first row will become first column, second row 0 1 3 egla second column, third row -2 5 and 3 egla third. Now what about A plus A transpose? A plus A, 1 plus 1 is 2, 2 plus 0 2, 0 minus 2 will be -2, 0 plus 2 will be 2, 1 plus 1 is 2, 3 plus 5 will be 8, -2 plus 2, -2 plus 0 will be equal to -2, and the 5 plus 3 will be equal to 8, 3 plus 3 will be equal to 6. Now look, A duta element equal, Ai is equal to Aj, and A duta equal, A duta equal, mane symmetric, mane symmetric is a symmetric. यार ट्रांसपोज बाहर करते सेम सेट आसी, यार जो ट्रांसपोज करिए सेम आसी, ठीक है। हमें कौन चेक कर लेते, Aij इक्वल टू Aj माने A12 और A21 इक्वल A23 और A32 इक्वल एंड A13 एंड A31 इक्वल, इतनी की तीनटा पेयर जो इक्वल हेगला देन सिमेट्रिक विथ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो. A माइनस A ट्रांसपोज यदि माइनस करेंगे A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस करिए, देखो दिस इज 1 minus 1 is 0, 2 minus 0 will be 2 and 0 minus of -2 will be +2. So 1 minus 1 will be equal to 0 first, 2 minus 1 will be equal to 2 and 0 minus of -2 will be +2 and 2 plus 2, this is 2 and this is +2. Then second row is 0 minus 2 will be -2 and 1 minus 1 will be 0, 3 minus 5 will be -2, 0 and -2. Then come to the third row, -2 minus 0 will be -2 and 5 minus 3 will be 2 and 3 minus 3 will be equal to 0. Look, all diagonals are 0. All diagonals are 0. सब diagonal element 0 अच्छे. अब ए दुटा element दे 1 2 और 2 1, गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव अच्छे, एटी 1 3 और एटी 3 1, पॉजिटिव नेगेटिव एंड ए आई जे रो जो वैल्यूटा अच्छे सेटा माइनस ए जे आई सहित इक्वल अच्छे, ऐसे इक्वल अच्छे ए जे आई सहित. देयरफॉर A minus A transpose is a skew symmetric matrix. It is a skew symmetric matrix. Tick. Next, prove that a unit matrix is its own inverse. Is the converse to unit matrix जो अच्छी is its own inverse. माने unit matrix का inverse unit matrix. If A equal to this, so that A square is equal to I and hence A equal to A transpose. So what the first part is, unit, prove the unit matrix is its own inverse. This is true. Is the converse true? Converse true माने जदि गोटे मैट्रिक्स अच्छे तार इनवर्स से नीचे, जदि गोटे मैट्रिक्स रो इनवर्स से नीचे माने से मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स हो. फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट ट्रू, converse is not true, converse is not true. Take an example. Let A is equal to what an empty matrix नेबे जार डिटरमिनेंट 1 होते जमती 1 और -1 एमती गोटे मैट्रिक्स नहीं तो जार डिटरमिनेंट 1 और -1 माने एटा जदी 4 नेले एटा -4 नहीं तो ए वैल्यूटा हे गेला -16, एटा जदी 15 नौ तो एटा -1 नहीं तो -16 प्लस 15 केते गेला -1 हेगा, डिटरमिनेंट कोन होची -1. तो एमती गोटे एग्जांपल नेले तो ए इनवर्स फॉर्मूला कोन होची 1 बाय, देखो इफ ए इज 1 by AD minus BC. देखो जदि A equal to कौन होगा ABCD
यार इनवर्स आने फॉर्मूला हम कौन करते हैं इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय AD माइनस BC D AD इंटरचेंज है B और C माइनस लेकर दिस इज द फॉर्मूला तो 1 बाय AD माइनस BC एठी D हबो एठी A हबो तो एटा हम डायरेक्ट लिख दी करिया AD माइनस BC माने कोन हबो so this is equal to 1 by minus 16 plus 15 A आउट इंटरचेंज हेगला माने minus 4 4 हेगला B आउ C रे माइनस लागि गेला माने 1 और minus 15 हेगला ठीक अछि so this is equal to 1 upon minus 1 हेगला एठी हेगला minus 4 1 minus 15 and 4 minus ता भितरु नै जो minus 1 बाहर अछि ना मल्टीप्लाई कर दे so this is 4 minus 1 15 and minus 4 this is also equal to A this is also equal to तो देखो हम कौन बाहर कले A inverse equal to A but A is not equal to I ना A is not equal to I A रो वैल्यू दा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हो A रो वैल्यू दा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हो still A is equal to A inverse एटा हम प्रूफ कर नाउ सेकंड पार्ट रे कौन प्रूफ करियार अछि कि A square is equal to I A is given है ना A square को हम I प्रूफ करियार अछि ठीक अछि या ताप और एटा प्रूफ करियार अछि A equal to A inverse तो A equal to 0 1 minus 1 4 minus 3 4 and 3 minus 3 and 4 0 1 minus 1 4 minus 3 4 and 3 minus 3 and 4 so this is A square now proof now first row into first column so 0 into 0 is 0 1 into 4 will be 4 minus 1 into 3 will be minus 3 first row second column 0 into 1 0 minus 3 and plus 3 0 into 1 will be 0 4 minus 4 4 into 0 will be 0 minus 12 plus 12 4 into 1 will be 4 plus 9 minus 12 and 4 into minus 1 will be minus 4 minus 12 plus 16 then third row into first column 3 into 0 will be 0 minus 12 4 into 3 will be plus 12 third row into second column 3 into 1 will be 3 plus 9 minus 12 3 into 1 is minus 3 minus 12 plus 16 minus 12 so 4 minus 3 is 1 this is 0 4 minus 4 0 this also 0 13 minus 2 1 minus 16 plus 16 0 12 minus 12 0 13 minus 16 minus 15 is equal to 12 minus 12 will be 15 minus 15 12 minus 12 0 minus 15 plus 16 is equal to 1 so A square is equal to I mean A is an involuntary matrix A is an involuntary matrix so A square equal to I now what else we need to prove how can prove correctly A is equal to A inverse so since A square is equal to I A square is equal to I multiply both sides by A inverse so A square into A inverse equal to I into A inverse but A square into A inverse will be equal to A I into A inverse will be equal to A inverse and hence the proof दुई पटे कौन कर ले A inverse के मल्टीप्लाई कर दे प्रूफ हेगला सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन 7 हम कौन देछि क्वेश्चन 6 रे जोटा देथिला A is involuntary माने A square is equal to I एटा को रिकॉल करबा को हेगला रिकॉल डेफिनेशन गिवन अर्लियर माने 6 और 7 क्वेश्चन रे हमको A square is equal to I प्रूफ करबा है ना जोटा हम 6 रे ऑलरेडी करछन नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8 so that this has its own inverse देखो एटी कौन कोची गोटे मैट्रिक्स एटा जोडा अछि या तर निजर इनवर्स केमति फाइंड करिया हाउ डू यू चेक इफ A square is equal to I if A square is equal to I involuntary matrix एबे हम देखले क्वेश्चन 7 रे involuntary matrix रो इनवर्स therefore A is equal to A inverse जदि A square is equal to I हबो जदि A square equal to I if the value of A square is I then A must be equal to A inverse so let's consider the given matrix is A. Let A is equal to 0 1 1 0
Now let us find the value of a square and check जदि सेटा I हला, जदि सेटा I हला, then a must be equal to a inverse. So a square is 0 1 1 0 multiplied by 0 1 1 0 0 1 1 multiply करें first row into first column 0 plus 1. This is 0 plus 0. This is also 0 plus 0. This is 1 plus 0. Now look, 0 plus 1 is 1, 0, 0 and 1. So this is equal to I. This is equal to I. And since a square is equal to I, a square equal to I, therefore a is equal to a inverse. It हम एपे क्वेश्चन 6 रे 7 रे प्रूफ करथि. ओके, तो एमती हम वीडियो प्रोवाइड करू. मो चैनल रो नुवा थी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो. अब बेल आइकन को प्रेस कर सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन. मोर ऐप टाउ डाउनलोड करी, मो ऐप टाउ डाउनलोड करी बहुत जिंस आपने तो पाइबे. 2018 19 20 21 और 22 एर सीएचएस रो बोर्ड पेपर हमें सक्सेसफुली अपलोड कर सारछु. या सहित ई चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें 4 वीडियो बने प्रति चैप्टर. सब चैप्टर वी हैव मेड 4 वीडियोस. हां, ईच कंटेनिंग पीवाईक्यूज माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर. एंड देन हम गोटे एमसीक्यू सीरीज रखछु. लास्ट ईयर हम एमसीक्यू सीरीज करते. अब से एमसीक्यू सीरीज सिर्फ एमसीक्यू अछि, सिर्फ एमसीक्यू अराउंड 1000 प्लस एमसीक्यू आर देयर. हां, 1000 प्लस एमसीक्यू आर देयर. एटा को प्रैक्टिस करिए काहे ना एमसीक्यू रो जो वेटेज अछि तुम पेपर सबठो अधिका एमसीक्यू रो. तो एमसीक्यू टा भले प्रैक्टिस कर. इवन लास्ट ईयर तो एमसीक्यू 50 मार्क्स थिला, ओनली एमसीक्यू. तो एमसीक्यू प्लेस ए वाइटल रोल इन योर पेपर. तो एमसीक्यू टा देखो, तो एमसीक्यू सीरीज टा को फॉलो करिए. हां, ओडिशा जी को हमने प्रिपेयर कोचिंग टारगेट थी ओडिशा जी हमर अराउंड 10 वीडियोस अछि, सेटा को देखिए. और जो मानकर टारगेट एबेटू जेई अछि, जेई मेंस एंड जेई एडवांस अछि, से मानक चैप्टर सरला परे, हां, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हमें 4टा लेके वीडियो अपलोड करछु. 2019 20 21 एंड 22. काइना 22 रो पेपर हमको एबे पर्यंत आसीनी, से पे हम कोन करछु 19 20 21 अपलोड करछु. 22 टा हम नियर फ्यूचर अपलोड करछु. जार जेई टारगेट अछि एबेटू जेई देखो, जार ओजेई टारगेट अछि एबेटू ओजेई रो बहुत वीडियो अछि, एवडा देखो. एमसीक्यू सीरीज को भले ही फॉलो करो. आउ 4 वीडियो अछि हमर ईच चैप्टर व्हिच कंटेन्स पीवाईक्यूज एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, सेटा को देखो. आउ सीएचएस रो पेपर हम सॉल्व करछु 2018 टू 2022. ऑल दिस विल हेल्प यू इन ग्रेट वे एंड ऑल दिस आर फ्री इन आवर ऐप. या ऐप रे हम सब को हम कोन करछु फ्री रखछु. तो गो सब्सक्राइब and download the app. हमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 पर्यंत 4B रो सॉल्व कर दे. और नेक्स्ट लेक्चर रे हमें क्वेश्चन नंबर 9 1 सॉल्व करबे. अंटिल देन बाय बाय.